Welcome back to the channel. So in today's video, we're going to cover another very interesting company in the power transmission and distribution space. And the company we're going to cover today is a transformer manufacturer, and the company is guiding to grow at 40% CAGR for the next couple of years. And the stock is also down 15-20% from its all-time highs. That provides us a good entry point as investors. So what we'll do in today's video is that we'll try to decode the business model of the company, what are the kind of entry barriers that the company has, and transformer manufacturer in general, that is not something that is has very high entry barriers or anything like that, but the company is growing at a good pace, and the company can grow sustainably for the next 1 or 2 years because the market size, as I mentioned in my previous videos as well, the market size or the total addressable market for transformers is so big that all of the companies can have a piece of the pie. So in today's video, we'll decode the business model as we said. Then we'll also do a result analysis of the company. We'll look at what are the key metrics that we must track when evaluating a transformer company. We'll look at how well the company fits, and as per my view, the company checks all the lists that we will discuss in the video. After that, we'll also do a result analysis of the company. We'll look at what kind of valuations are coming out from an FY27 basis, because this is a high growth company, right? You can't look at the TTM basis per valuations and then judge the future outlook of the company. So we'll do that. So on that note, let's start the video. So the name of the company is Atlanta Electricals, and as I mentioned, the company is a capital goods player. Now, whenever people look at your transformer companies or capital goods company, they think that the business model is not very unique, or the business model does not have high entry barriers, like anyone with a lot of money can come in and give in competition. But in today's video, we'll look at what are the key factors that we must track in order to see whether a transformer company actually differentiates, like company के entry barriers क्या है and how we differentiate it from a different players. We'll see in the video. So company का business model in general is very simple. It makes transformers and sells it to different companies like Power Grid, NTPC, all of these different types of companies, mostly state utilities. So if you look at it, what Atlanta Electrical does is that it makes your high voltage electrical transformers that manage AC voltage levels. So in my past videos, many videos, I've covered how transformers actually work, उनका use किधर है. So you can refer to that video as well. बट इन सिंपल कैसे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स, एंड विद इन दैट देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स लाइक पावर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट. So company ka main focus is on power transformers, which is approximately 75 to 80% of the business. Then there's inverter duty and auto transformers. We'll look at what these transformers specifically do in the video. But for now, the company is more focused on power transformers. And globally भी कैसा चल रहा है कि given the kind of power CapEx that is going on in India and the kind of grid modernization in Europe and US वगैरह, so there's a very shortage of your power transformers and distribution transformers, due to which these transformer companies, which were initially price takers, become price makers. Because अगर market में supply नहीं है, then I can decide the price or I can get better pricing. प्लस कैसा है कि एक डिमांड अपना बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो फिर कंपनी को एक अच्छा आउटलुक भी मिलता है कि डिमांड 1-2 साल के लिए बहुत अच्छी हो रही है, सो मैं अभी कैपेसिटी वगैरह बढ़ा सकता हूँ. आई कैन ग्रो माई बिजनेस वेल फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. And as we discussed, what are the end markets? Transmission and distribution, grid utilities, GetGo, PGCIL, NTPC, all of these grid utilities, as well as your solar and wind farms. So basically कैसे रहता है, अगर सोलर फार्म कैसे बहुत रिमोट लोकेशंस में रहता है, तो उधर से पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक रीयूजेबल लोकेशन जैसे कि फैक्ट्रीज, ऑफिसेज या सोसाइटीज़ वगैरह कमर्शियल यूज़ के लिए अगर वो जाना है, तो फिर यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स. प्लस द कंपनी इज डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बिकॉज गिवन द काइंड ऑफ जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी वी हैव, सप्लाई चेन डिसरप्शंस वगैरह से देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग योर रॉ मटेरियल्स. सो कंपनी इज ऑल्सो बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर इट. Now, coming to the operational footprint, कंपनी के 5 मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, and company की total aggregate capacity is 63,000 MVA. Now compare this with last year. Last year company की capacity was approximately 20,000. So उधर से company has approximately 3x jump in its capacity, and this is one of the reasons that is driving the 40% CAGR की growth. So basically capacity अगर 3x हो रही है, then you can of course grow at a good pace going forward. And also company received its approval for the 400 kV class, and company is also developing 765 kVK at its new facility Atlanta Trafo. That is an acquisition company did. Now we have special importance to this upgrading voltage class, because this factor differentiates a good quality transformer business from a low quality transformer business. Because as you move higher up the kilovolt, or as you move into more high voltage and extra high voltage transformers, जो specialization रहता है, जो technology need रहता है, और जो अपने क्या बोलता है
अप्रूवल या सर्टिफिकेशन साइकिल रहता है दैट इज़ मच स्ट्रॉगर एंड स्ट्रिंजेंट. सो दैट बिकम्स काइंड ऑफ लाइक एन एंट्री बैरियर फॉर द बिजनेस कि कोई भी अगर नई कंपनी को मार्केट में आना है तो फिर उसको 2-3 साल अप्रूवल करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, खुद की टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी टू गेट अप्रूव्ड बाय योर PGCIL and other vendors. So before we move on to the transformer portfolio and applications, let's quickly understand कि when we analyze a transformer company, what are the key metrics that we must look for, or what are the differentiating factors. So first is most important, order book and order inflows. As I mentioned in my previous videos as well, in capital goods company, the most important factor is your order book, because order book is a direct representation of how well you can grow in the future. And as we know, market cares कि आप future में कैसा grow करने वाले हो rather than past में कैसा grow कर रहे हो. So order book as well as order inflows is the most important metric. Second is your product mix and voltage class. As we briefly discussed कि higher kV के classes, that is your 400 kV and 765 kV में they have higher technological barriers, better pricing power, as well as significantly better EBITDA margins. The next is capacity and utilization, because अगर capacity increase कर रहे हो, that is mainly for two reasons. First is because you see very good demand, and second is because you want to grow as a company. तो अगर आपका डिमांड आउटलुक बहुत अच्छा 2-3 सालों के लिए, then of course you will do capacity utilization. That capacity utilization will reflect into higher revenues going forward, given you have good utilization. प्लस रॉ मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज ये जो CRG होता है एंड ऑल ऑफ दीज अदर रॉ मटेरियल लाइक कॉपर वगैरह, दैट सप्लाई चेन क्राइसिस की वजह से दैट बिकम्स अ वेरी की मेट्रिक टू ट्रैक. बिकॉज लेट्स से टू कंपनीज राइट, टू कंपनीज हैव द सेम डिमांड आउटलुक, बट एक कंपनी का रॉ मटेरियल या फिर सप्लाई चेन इज़ वेरी गुड, मे बी द कंपनी इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, इट हैज़ गुड रिलेशन विद सप्लायर्स वगैरह वॉट एवर. बट क्या होता है कि अगर आपको इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है तो फिर वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए नीड दी नेसेसरी रॉ मटेरियल्स. बट अगर आपका रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो जाएगा देन यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट दी ऑर्डर्स, यू विल डिले दी ऑर्डर्स. दैट इज वाई वी ऑलवेज लुक एट कि कंपनी का सप्लाई चेन कैसा है, कंपनी कैसी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, विच इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वेल द कंपनी कैन एग्जीक्यूट गोइंग फॉरवर्ड. एंड अ गुड कंपनी में से क्या होता है कि गुड कंपनी का मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है कि वेदर वी हैव अ गुड सप्लाई चेन और नॉट, वेदर वी आर वर्किंग ऑन इट. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका कॉम्पिटिटर है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया करके, which I was bullish on. I won't lie कि I was bullish on the company, but the company did not do well. I'll discuss in a separate video कि इसमें से मेरी key learnings क्या थे और why the company did bad. But एक good management आपको बोलेगा किसी supply chain अभी अच्छी नहीं है but we are backward integrating, we are working on it. Rather than end of the quarter के बाद कंपनी बोलेगी कि अरे नहीं ये रीज़न था, supply chain ऐसा था, वो वैसा था, इसके वजह से हम अच्छा execute नहीं कर पाए. So that's another qualitative factor that you must look for. But moving on to the product portfolio and applications. So basically power transformers, they are heavy duty units that are designed to step up voltage at generation plants or step it down at transmission substations for long distance transport. You can also read the primary use cases. And auto transformers क्या होता है? They are highly efficient transformers that have a single continuous winding shared by primary and secondary units that is ideal for closely linked voltage levels. So that is used for interlinking high voltage grid systems, system voltage regulation, and large scale utility sub transmission networks. Then we have your inverter duty transformers that are used to step up fluctuating AC outputs from solar or wind inverters to match the intermediate grid levels. So कैसे होता है कि जो सोलर पार्क्स और फिर विंड फार्म्स पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अपना HVDC पे मैच करने के लिए जो लगता है दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स. एंड कंपनी दिस इज ऑल्सो हाई ग्रोथ सेगमेंट बिकॉज आप देख रहे हो कितने बड़े स्केल पे ऑल ऑफ दीज बिग कंपनीज आर पुटिंग अप सोलर एंड विंड फार्म्स. सो फिर नेचुरली IDT की डिमांड वगैरह भी बहुत बढ़ेगी. सो कंपनी एज वील गो डीपर इन द कंपनी वी लुक एट व्हाट आर द एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ द कंपनी इन दैट सेगमेंट एज वेल. Now looking at what are Atlanta Electrical strategic alignment or differentiating factors is that company has a very good order book visibility. When we look at the results, we'll understand this more clearly. कि strong government utilities and private renewable client base are driving a growing order pipeline. Plus company is forward integrating or moving higher up the value chain into your EHV and HV. Company recently got its 400 kV approval in last quarter from PGCIL and plus 765 kV अभी कंपनी का टेक्नोलॉजिकल टाइप चल रहा है. सो गोइंग फॉरवर्ड दिस कैन बी अनदर ग्रोथ ट्रिगर फॉर द कंपनी. एंड ऑल्सो कंपनी हैज 63,000 MVA ऑफ टोटल कैपेसिटी एंड कंपनी इज वेल पोजिशन टू कैप्चर ओवर द पूरा पावर T&D का कैपेक्स. सो नाउ एक एक करके कंपनी का मेन फैक्टर्स डिकोड करते हैं. सो फर्स्ट इज ऑर्डर बैकलॉग एंड प्रोडक्ट मिक्स. So if you see in Q1 results, company's order book expanded to 3,100 crores, which is up 25% on a quarter-on-quarter basis and also up 2 times nearly. Last year, same quarter, company की order book has grown by almost 2x.
So this is another reason why company is growing at 40% CAGR. Also, it has approximately 18 to 24 month revenue visibility. So company also secured 972 crores in new order inflows and also got major orders from RRVPNL and PSTCL. These are basically your state utilities. एंड इसमें ऑल्सो कंपनी का ट्रांजेक्शन कैसा चल रहा है. ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ऑर्डर बुक कंप्राइजेज ऑफ 220 kV ट्रांसफॉर्मर्स एंड 400 kV ट्रांसफॉर्मर्स आर अप्रॉक्सीमेटली 275 करोड़. सो कंपनी जो पहले लोअर kV क्लास के ट्रांसफॉर्मर्स बना रही थी, नाउ कंपनी इज स्लोली मूविंग फ्रॉम 220 kV प्लस 400 kV to 765 kV now. Now with that, we'll move on to the capacity expansion kind of plans of the company. So if you look at it, company की total capacity scaled from 16,000 MVA to 63,000 MVA in approximately 1.5 years. So you can see company की capacity 16,000 से 63,000 बन गई in just 18 months. And plus legacy manufacturing plants, that is your units 1 and 3, operate at near peak utilization, driving operating leverage and fixed cost absorption. Because कैसा है, वो plants का mostly जो capex डालना था और mostly जो खर्चा था वो खर्चा भी हो गया है. So these are kind of like the cash cow generating businesses. एंड जो अभी नए प्लांट्स आएंगे तो फिर अभी जस्ट नए इस्टेब्लिश हुए, प्लस कुछ कुछ प्लांट्स अभी लाइव आना बाकी है. सो धीरे धीरे एज द रैम्प अप इंक्रीजेज, एज द यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज, दीज ऑल्सो बिकम गुड मार्जिन ड्राइविंग फैसिलिटीज. एंड ऑल्सो वडोड में कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30,000 MVA, दैट इज रैम्पिंग अप टू ऑलमोस्ट 40% एनुअलाइज यूटिलाइजेशन. एंड प्लस कंपनी का PGCIL से 400 kV का अप्रूवल आ गया. सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी. एंड ऑल्सो कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया था, दैट इज द यूनिट 5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 15,700 MVA, दैट इज ऑपरेटिंग एट 15% एनुअलाइज यूटिलाइजेशन, ऑफरिंग मैसिव नॉन लीनियर ग्रोथ हेडरूम. सो बेसिकली कैसा है कि कंपनी के जो दो सबसे बड़े यूटिलाइजेशन है, दो सबसे जो फैसिलिटीज़ है दैट आर रनिंग एट लो यूटिलाइजेशन. सो गोइंग फॉरवर्ड एज द यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज, कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा एंड प्लस कंपनी कैन ऑल्सो ग्रो बॉटम लाइन फास्टर देन योर टॉप लाइन. So that was all about the company in general. So that was all about the business model of the company. We saw how company के expansion plans है, how company की order book grow की है. Now we'll dive deeper into the results. We'll look at the Q1 results and we'll also look at the more company specific details of the company. So as you can see on the screen, I've made this dashboard. And in this dashboard, what you can see is that in the latest quarter, company's revenue increased by 40% year on year. एंड माइंड यू, ये कंपनी कैसा है कि पूरे ट्रांसफॉर्मर इन जनरल कैपिटल गुड्स का कैसा रहता है कि Q1 एंड Q2 इज़ जनरली लोअर बिकॉज सीजनैलिटी रहती है कंपनी के. दिस इज़ द फेज वेयर कंपनीज थोड़े बहुत ऑर्डर्स वगैरह देते हैं एंड Q3 Q4 में इट इज़ द एग्जीक्यूशन पीरियड. सो Q3 एंड Q4 में जो रेवेन्यू, EBITDA, जो कुछ भी बोलो, दैट इज़ मोर H2 फोकस्ड. If I can just give you with an example, let me just open up and I'll show you what I mean. So if you look at it, कंपनी ने लास्ट ईयर Q4 में अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का पैट किया था एंड पूरे FY26 में कंपनी ने 200 करोड़ ऑफ पैट. सो यू सी ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स पैट वॉज डन इन अ सिंगल क्वार्टर. So that is why Q3 and Q4 is generally the strongest quarter and Q1 and Q2 is a bit weak. That is just the seasonality of the business. Doesn't mean it's a bad or a good company or a bad business model. That is just how things are. And plus, if you look at it, company's margin also expanded to 16.5%. But if you look at sequentially of course weak होगा because Q4 is the strongest quarter and Q1 and Q2 are generally weak quarters. And इसका एक peer भी देख रहा था मैं, तो फिर they say that transformers में approximately 40% comes in Q1 and Q2 and 60 to 65% comes in your Q3 and Q4. So even if you look at the results, company grew its top line by 48%, PAT by 50%, and its EBITDA grew by 58%. So company is seeing nice operating leverage, and these are the main reasons company इतनी अच्छी grow क्यों की. Because first volume led revenue boost, company के approximately 4,300 MVA सिर्फ Q1 में execute हुआ, which is up on a tremendous basis, year on year basis पे. And gross margins also improved to 27% due to a shift towards EHV and a higher kV के products. As we mentioned before, that is one of the main margin driving levers. And also operating leverage भी company को मिल रहा है. And also company's order book growing at a massive pace. So these were some of the reasons company के results इतने अच्छे क्यों आए. With that, we'll look at what kind of growth outlook the company has. So if you look at it, company's order book is at an all-time high of 3,100 crores. And Q1 में mostly revenue came from T&D, which is its biggest revenue driver. Then it came from renewable, solar and wind as well. And if you see कि transmission distribution 66% mix, ये सबसे ज़्यादा execution आ रहा है.
इसमें मार्जिन 15-17% के है, बट इन योर रिन्यूएबल एनर्जी दैट हैज़ 16-18% margins, and exports and special markets that has approximately 18% margins. And exports में भी companies also targeting 15% revenue mix in 3 years, because कैसा रहता है, अगर आप exports में जा रहे हो तो फिर उधर भी time लगेगा to establish yourself as a very good player, to उधर के clients लेना, testing वगैरह करना, all of that. So that is why companies are getting 15% revenue in 3 years. And I've also made this watch list that you must track on a quarterly basis to see if the company is on the right track. Because if you look at it, company वैसे देखा जाए तो इतनी भी expensive नहीं है, but the company is trading at 54 times. So margin for error is there, but it's quite low. So these are the key metrics that you have to track, because हमको क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा इफ़ मैनेजमेंट इज़ वॉकिंग द टॉक, इफ़ मैनेजमेंट ने जो बोला है वो मैनेजमेंट एक्चुअली कर रहा है. बिकॉज मैंने बोला कि टैरिल करके एक कंपनी थी, वो मैनेजमेंट कैसा है, हर क्वार्टर में आके कंपनी अपना मैनेजमेंट बदल रही है, सॉरी अपना गाइडेंस बदल रही है, अपना गाइडेंस रीआइटरेट कर रही है, सारे फालतू रीजंस दे रहे हैं. बट एज अ इन्वेस्टर यू हैव टू सी कि भाई तूने मुझे ये बोला, तू नहीं कर पा रहा, सो आई कांट कीप अवॉर्डिंग यू. If you are a company that is failing on its guidance, then I have to remove you from the portfolio, because in the end भाई आप देखो stock has stayed in the same price for the last 6 months. मैंने वो पैसा निकाल के एक अच्छे स्टॉक में डाला, then I'll be able to make returns and make more money. Instead भाई पैसा एक गंदे स्टॉक में सड़े रहने से अच्छा है मैं उसको I'll accept a loss, I'll accept that I'm wrong or anything, but I'll put it into a good stock, right? ये मेंटालिटी आप जितना जल्दी अडॉप्ट करोगे the more money you can make. सो ये क्या वॉच लिस्ट है, ये हमको हर क्वार्टर पे ट्रैक करना पड़ेगा इफ द कंपनी इज एक्चुअली डूइंग इट. सो फर्स्ट इज द 765 kV टाई अप एंड द PGCIL से इनका वैलिडेशन आना. दिस इज अ Q2 to Q3 FY27 काइंड ऑफ ट्रिगर, and we have to see the finalization of the technical agreement with its global partner, and also its PGCIL का validation आना for the Atlanta Trifo plant. And target metric क्या है कि agreement signing in Q2, prototype material injection in Q3, and the first KV unit built in Q4. सो लास्ट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए ये अपना रोड मैप क्लियर है. प्लस द क्वालिटी एंड टेस्टिंग 400 kV का जो शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग क्लियरिंग है वो हमको देखना है एट द एंड ऑफ Q2 FY27. एंड मैनेजमेंट ये हर क्वार्टर में आके बोलता है, ये एनालिस्ट लोग वगैरह भी क्वेश्चंस पूछते हैं. यू हैव टू लुक एट दीज क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट क्या बोल रहा है. एंड सक्सेसफुल शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्लियरेंस इनेबल्स द कमर्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ द 275 करोड़ 400 kV ऑर्डर बैकलॉग इन H2. बिकॉज द थिंग इज अगर ये एक क्वार्टर से भी डिले हो जाता है ना, तो फिर ये 275 करोड़ का जो रेवेन्यू आना था वो एक क्वार्टर से डिले हो जाएगा, तो फिर ये मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है. बिकॉज द मार्केट केयर्स अबाउट द फ्यूचर. अगर आप फ्यूचर में ऐसे डिले करते रहोगे तो फिर आपका एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं ना. ये तो हो गया कि हवा में बात है बट आपका एग्जीक्यूशन लो चल रहा है. सो दैट इज वाई वी लुक एट इट. EBITDA एंड पार्ट मार्जिन स्टेबिलाइजेशन, दैट इज समथिंग that will be a bit volatile given the geopolitical uncertainty we have, but also we have to look at it. And another thing is that your 500 MVA inverter duty plant life that is used in your renewable solar and wind farms. So December 2026 का इसका target है. We have to see commissioning of facility before your December 2026, and immediate capacity absorption starting Q4 FY27 in your PL, plus the export order booking and delivery. That is a 3-year vision. Then इसमें हमको देखना है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस क्या है, अप्रूवल्स क्या है, एंड एक्सपोर्ट में ऑर्डर इनटेक क्या है कंपनी का. And also we have to look at the supply chain and working capital cycle, CRGO, anti-dumping and cash cycle. We have to look at the net working capital days that is maintained at 720 days and the cash conversion cycle at 83 days. So that means कि कंपनी अगर इन्वेंट्री बिल्डअप कर रही है तो फिर वो देखना पड़ेगा कंपनी क्यों कर रही है. बिकॉज सिरमा SGS करके एक कंपनी है दैट इज डूइंग अ स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री बिल्डअप. बिकॉज अभी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है, मैं अभी रॉ मटेरियल लेके रखता हूँ सो दैट मेरी इतनी जो ग्रोथ आनी है वो ग्रोथ डिले ना हो जाए. So you have to look out for that as well. With that, we'll move to the capacity expansion section. You can also see here, you can just get a brief of company capacity कैसे scale up करेगी, company के utilization कैसा scale up करेगा in each of the quarters, and you can also take notes as to कि company on track है या नहीं अपने guidance के लिए. So this is also the kind of timeline you can see कैसा कैसा चलना चाहिए and company का utilization वगैरह कैसा होना चाहिए. With that, we'll look at the valuation and projection section. So if you see, company has guided to grow top line at 40% and stable EBITDA margins. So that makes the company very interesting. So if you look at it on a base case, company can grow 40% revenue year on year, and company ka PAT at 11% margin becomes 285 crores. According to that, the forward P comes at 42 times, which is very reasonable given the company is growing at 40%. So 40 times earnings is almost a one-time peg. And also TTM basis pay also the company is not that expensive. So entry point as investors could be good. And अगर bull case में देखोगे 36 times and bear case में the company is at 55 times.
So all in all, we understood the company का business model अच्छा है, company का business is heading in a right direction. We see company capacity expansion अच्छा कर रही है, order book and order inflows are at an all-time high. Also, the company is moving into your high voltage segments and extra high voltage segments. Also, company के ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है, कंपनी का एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाइडेंस देते जा रही है कंपनी. एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट द कॉन कॉल इनसाइट्स फॉर द कंपनी. आई जस्ट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो to view each question and answer. This is actually very important because you get to understand small important things about the company. So yeah, once you get that, with that we'll move towards the conclusion of the video. So these were all of the reasons why this is a very interesting company. And just a standard disclosure, guys, that I am invested in this company. I think Q2 or Q3 of last year, say I have started adding in this company. And the reason for covering this is because I think these are good levels to add, because stock थोड़े बहुत देर sideways रह सकता है and a re-rating can come once Q2 Q3 के results which are more good, they can come. So all in all, a good company available at good valuations. So that was it for today's video, guys. I hope you guys liked the video, found it informative, found the analysis informative. And if you found it informative, make sure to like the video, comment down below your favorite part of the analysis, and also subscribe to the channel for more such upcoming analysis. And with that, I'll see you guys in the next one. Thank you.